Hello everyone, so let's begin with a new chapter, Women Change the World. Let's start. Chapter 5, Women Change the World. Let us learn about women's struggle for equality, new opportunities for women and women's movement. In the 21st century, women have made progress in various walks of life. Although gender stereotype and prejudice against women still exist, education and broad-mindedness make way for a better future. Now is 21st सेंचुरी में women ने बहुत improve किया है, बहुत progress किया है in every field. Women are working and they are progressing also. So although gender stereotype आज भी है, there are a lot of people who just discriminate between a girl and a boy on many cases on many bases. But against people have made many judgments for women before only also. But still, education and broad-mindedness are also there in some people's mind that has made the career of the women in every field better. Professions and careers that were till now seen as suitable only for men, unme bhi considerable increase in the number of women who have not only joined in but have they seen the tremendous success. जहाँ पर सिर्फ men ही काम करते थे. But today, women are also there in the same field and they are working better than men. Women are making a mark in aviation, banking, athletics, technology, entertainment, education, business, food, beverages, art, literature, medicine, and many more fields the women are working now. Schooling and education today. Providing schooling facilities to children of all communities and class, especially girls, continues to be a big challenge. As per 1961 census, in a census detailed information about the population of the country that is collected after every 10 years. 40% men over the age of 7 वो literate हैं, that is could write, वो अपना नाम लिख सकते हैं, जबकि 15% women literate है. फिर 2001 के सेंसस में जो फिगर्स हैं वो बढ़ गए, 76% men और 54% women, बट गैप आज भी उतना ही है. फिर अगर आप एनालाइज करो लिटरेसी रेट टेबल 2011 के अकॉर्डिंग, तो आपको दिखेगा कि स्टिल एक वाइड गैप है लिटरेसी लेवल में फीमेल्स और मेल्स, स्पेशली रूरल एरियाज में. स्टिल बहुत सारे पार्ट्स ऑफ द कंट्री में गर्ल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है इन मैटर्स ऑफ एजुकेशन. दे आर एक्सपेक्टेड टू डू हाउस होल्ड वर्क करने के लिए उनको कहा जाता है. इवन व्हेन दे आर सेंट, उन्हें अगर घर स्कूल भी भेजा जाता है, स्टिल सोसाइटल प्रेशर में आके उनको मैरिड अर्ली एज पर उनकी शादी कर दी जाती है और दे आर कंपेल्ड टू लीव द. So this is the urban males and females and rural males and females. Study the graph given below to see that more girls drop out of the school than boys. ज़्यादा girls को drop out किया जाता है, बहुत सी girls को required to leave poverty की वजह से. हमारी सोसाइटी में boys को first preference मिलती है. So whenever there is an economic crisis in the family, तो girls पहले होती है to be pulled out of the school. अगर आपकी economic crisis आ जाती है family में, still it is very less in some places now. बट आज भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, बहुत से ऐसी फैमिलीज हैं जो गर्ल्स को स्कूल से निकाल देती है जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर फेसिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस. So many a time students have to travel long distance, जाना पड़ता है स्कूल में, एंड एब्सेंस ऑफ स्कूल बस नहीं होती, वैन्स नहीं होती, तो पेरेंट्स को ये अनसेफ लगता है फॉर द गर्ल्स टू अंडरटेक लॉन्ग जर्नी टू स्कूल. तो इन जनरल एक हाई ड्रॉप आउट रेट है अमंग चिल्ड्रन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट. In rural areas, children quit schooling due to lack of schools and teachers. Another reason is that children of scheduled caste and Adivasi communities they often discriminate करते हैं against the upper section. Steps taken by the government. Equality foundation है हमारे constitution का. हमारा constitution ये कहता है कि being male हो या female, it should not be the reason for discrimination, नहीं होना चाहिए. But as we have seen, हमने देखा inequality exist करती है sex के बीच में. तो government ने बहुत steps लिए हैं इस inequality के. इक्वल राइट्स, हर एक सिटीजन, अ मैन एंड वुमेन नॉट लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, उसको राइट टू वोट दिया जाता है. गवर्नमेंट ने एक्ट पास किए ताकि वो इक्वल शेयर दे सके वुमेन को इन द प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट्स. एजुकेशन, हर गवर्नमेंट हैज बीन एम्फसाइजिंग ऑन वुमेन एजुकेशन. इसके लिए मेनी न्यू स्कूल्स एंड कॉलेजेस दे हैव बीन ओपन ओनली फॉर वुमेन. गवर्नमेंट हैज आल्सो इनिशिएटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स भी इनिशिएट करें ताकि वो इनकरेज कर सके गर्ल चिल्ड्रन को अटेंडिंग दी schools. Stretch facilities. Government has passed laws उन्होंने पास किए जो mandatory for organization that have more than 30 women employees. से भी ज़्यादा है to provide the stretch facilities provide हो रही है. Anti-dowry law. Government has passed the anti-dowry law that declares giving and taking dowry
डाउरी लेना और डाउरी देना दोनों इलीगल है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैज बीन सेट अप इन 1990 ताकि वो राइट्स ऑफ वुमेन को सेफगार्ड कर दे। वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स, several schemes have been introduced by the government in order to empower women, like Women Helpline Scheme that envisages provision of 24-hour emergency and non-emergency response करता है to all women affected by violence. Ujwala Scheme for prevention of trafficking and rescue, rehabilitation and reintegration of victims of trafficking and abuse. उनके 5 components हैं: prevention, rescue, rehabilitation, reintegration and repatriation. स्वाधार गृह, सुधार गृह में एक स्कीम है विमेन के लिए डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में। एक इनिशिएटिव है जो हरियाणा गवर्नमेंट ने लिया ताकि वो घर बना सके लिए विमेन और गर्ल्स के लिए जो रेस्क्यू किए जाते हैं लोग बाय ट्रैफिकिंग और डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूज का शिकार होती हैं, विक्टिम्स होते हैं, उनके लिए ही बनाया जाता है। वन स्टॉप सेंटर स्कीम एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सेट अप इन 2015 इन छत्तीसगढ़ फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ विमेन सब्जेक्टेड टू वायलेंस। विमेन्स मूवमेंट, आफ्टर इंडिपेंडेंस अनलाइक वेस्टर्न फेमिनिस्ट मूवमेंट की तरह ना होके इंडिया की मूवमेंट जो वुमेन की रिफॉर्म के लिए था दैट वाज इनिशिएटेड बाय मेन और लेटर ज्वाइन कर दिया वुमेन ने भी ज्वाइन। इन रिफॉर्मर्स की जो एफर्ट्स थे उसमें अबॉलिश सती प्रथा को हटाया गया, चाइल्ड मैरिज को हटाया गया, विडोज को अलाउ चॉइस दी गई टू रीमैरी, वुमेन एजुकेशन को प्रमोट किया गया, ऑब्टेनिंग लीगल राइट्स फॉर मेन ताकि वो प्रॉपर्टी में हिस्सा उनको मिल सके, लॉ टू एक्नॉलेज वुमेन की स्टेटस को, उनको बेसिक राइट्स देने जरूरी थे, ऑल चीज थिंग्स आर गिवन टू देम इन मैटर्स लाइक एडॉप्शन। सूनर और लेटर वुमेन ने अपनी वॉइस रेज करी जस्टिस जो उनके साथ किया जा रहा था इन द मैन्स वर्ल्ड। वुमेन की इंडिविजुअली और कलेक्टिवली उन्होंने स्ट्रगल करा इक्वल अपॉर्चुनिटीज के लिए सोसाइटी में, जिसको हम वुमेन्स मूवमेंट कहते हैं। एजेंडा ऑफ वुमेन्स मूवमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और पे बराबर है, इंप्रूव पब्लिक फैसिलिटीज फॉर चाइल्ड केयर स्पेशली रूरल एरियाज में, strict legal actions in case of violence against women whether in public or in private sphere, ending discrimination on grounds of sex, race, religion and ethnicity। और इंडिपेंडेंस से पहले विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन ने डिमांड किया पॉलिटिकल राइट्स एंड विमेन्स पार्टिसिपेशन इन द पब्लिक एरेना। आफ्टर इंडिपेंडेंस विमेन ऑर्गेनाइजेशन अब टू इश्यूज लिए जैसे कि एंटी प्राइस राइज इन मुंबई बॉम्बे, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को मूवमेंट हो, एंटी अटैक मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश। बिटवीन 1970s और 80s में विमेन ग्रुप्स ने इश्यूज लिए जैसे कि डाउरी डेथ्स, ब्राइड बर्निंग, रेप, फोकस्ड ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, तो ओपनली डिस्कस किया इशू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस को। इनकी जो मूवमेंट थी फर्स्ट टाइम उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया ताकि वो प्राइवेट इश्यूज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस को उठा सके। उन्होंने अडॉप्ट करे 2 मेथड्स ऑफ स्ट्रगल इश्यूज को रेज करने के लिए, रेजिंग अवेयरनेस थ्रू स्ट्रीट प्लेस सॉन्ग्स एंड पब्लिक मीटिंग्स, प्रोटेस्टिंग थ्रू पब्लिक रैलीज, एक पावरफुल वे को जो ड्रॉ कर सके अटेंशन टू इनजस्टिस। Consequences of women's movement, Supreme Court 1997 में laid down guidelines to protect women को अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट के अकॉर्डिंग वर्क प्लेस पर अगर उनको हरास किया जाता है एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में तो उसके अगेंस्ट भी राइट्स बनाए गए। 1977 में यूएन जनरल असेंबली जो थी उन्होंने अडॉप्ट करा रेजोल्यूशन कॉलिंग ऑन मेंबर स्टेट्स को कॉल करना टू प्रोक्लेम अ डे फॉर विमेन्स राइट्स और इंटरनेशनल पीस। तो वहां पे विमेन सारी कंट्रीज की वर्ल्ड की दे केम टुगेदर टू सेलिब्रेट एंड रिन्यू देयर स्ट्रगल, जिसको इंटरनेशनल विमेन्स डे कहा जाता है। ये 8 मार्च को भी सेलिब्रेट इंटरनेशनल वुमेन्स डे। 1980s में डाउरी लॉज को बदला गया ताकि फैमिलीज जो डाउरी मांगती है उनको पनिश किया जाए ताकि डाउरी डेथ्स ना हो। 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लॉ पास किया कि वुमेन को प्रोटेक्ट करना है फिजिकल और डोमेस्टिक वायलेंस। Though today a large number of girls admissions लेते हैं schools in India but do not continue it for long for several reasons like poverty, inadequate schooling facilities and discrimination, providing equal schooling facilities to children from all communities and class and backgrounds and particularly the girls continues to be a challenge है in India even today. Getting an education बहुत important है women के लिए and only after that वो achieve कर सकते हैं dreams को, goals को and they contribute कर सकते हैं society को। तो हमें inspiration लेना चाहिए women को जो successful women entrepreneurs हैं इंडिया में भी as well as other countries। बहुत सारे women organizations भी working है, they are working to help women of India जैसे कि सहेली, काली etc. But women of India should realize their name's inner strength and fight for their rights. Only then their aspirations to live a life of dignity and respect fulfill hope.
Contemporary women's movement. The Self-Employed Women's Association सेवा movement in Ahmedabad led by Allahabad that began in 1962 में शुरू की गई, वो एक pioneering women's trade union movement था. ये एक लैंडमार्क था इन द हिस्ट्री ऑफ कंटेम्प्रेरी वुमेन्स मूवमेंट. वुमेन इन्वॉल्व करती है बहुत सारे ट्रेड्स में इन द इनफॉर्मल सेक्टर. दे वर ब्रॉट टुगेदर बाय देयर शेयर्ड एक्सपीरियंस जैसे कि लो अर्निंग्स, हरासमेंट एट होम, harassment by contractors, police poor work conditions, non-recognition of their labor, etc. Apart from collective bargaining, movement strove to improve the working condition. Training. तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने मूव किया डिमांड्स ऑफ रेडिकल चेंज टू डाइल्यूशन या कॉम्प्रोमाइज ऑफ देयर अर्लियर पॉलिटिकल. However, one noteworthy feature जो है contemporary women's movement का, that is that it draws उस resources को draw करता है from experiences of diverse group of women. Summary of the chapter: with the changing times, more and more women are going out to work. Yet traditional stereotypes limit opportunities for women. 19th century was an age of new weakening as many new thoughts about education and learning surfaced. Women of today is aware and fighting a battle against inequality. Women individually and collectively struggle to get equal opportunities for women in the society, and this is known as women's movement. Public meetings and demonstrations are very influential medium of drawing attention to the injustice that women suffer. Let's move ahead to the exercise for the correct option. Which of the following reasons are responsible for high dropout rate among children of Dalits and Adivasis? All of these. Which one of the following factors are steps taken by the government to control the gender inequality? All of these. Which law protects women against domestic violence in India? Domestic Violence Act. Seva movement was led by Allahabad. Let's do fill in the blanks. The work that women do with home is recognized as work. More than 80% of domestic workers in urban areas are women. That is mainly responsible for many stereotypes prevalent in our society, poverty. So I hope you all have understood this chapter. You can go through it again, learn the chapter, revise it again. Bye bye. Take care.